Good morning children. Yesterday we have seen about power. Today we'll see some numericals and then last topic law of conservation of energy. Let's see numerical. Before we start numerical beta, which formula we will use for finding the power? That is W by T or E by T for power. Okay beta? And one more thing, unit of power is watt, which is denoted by W, or one more unit is there, that is joule per second. Unit of work and energy joule and time का second. So joule per second इसको आप लिख सकते हो ऐसे joule per second. So this unit is equal to watt. Okay, so we can use here watt as well as joule per second. Understood beta? Let's see first numerical. Question is, first question beta, a body does 20 joules of work in 5 seconds. Question is, a body done 20 joule work in 5 seconds. 20 joule work means W is equal to 20 joule and in 5 seconds. एक बॉडी बेटा काम करती है 20 जूल 5 सेकंड में, means time is 5 seconds. That is very simple. And find the power. So simple formula for power is work done by time. So 20 work done जूल में होना चाहिए और टाइम सेकेंड में. So joule per second we will get 5 4 जा 4 joule per second. You can write here or 4 watt. Understood beta? So simple. Let's see one more numerical. ये आपका इजी था बेटा. Directly work done and power and time was given, so directly we can find the power. But work done or energy is not given directly, then how can we find power? So first of all we will calculate that work done and energy, then we can find the power. Suppose question is here, what is the power of pump? What is the power of pump which takes 10 second? जब भी क्वेश्चन रीड करो बेटा तो थोड़े थोड़े पार्ट में एक एक इंफॉर्मेशन जो गिवन है पहले उसको लिखते जाने का. which takes 10 seconds to lift 100 kg means mass is 100 kg. Similar questions are given in textbook and workbook. Please do complete your workbook today only. Okay, 100 kg of water to a water tank. What is the power of a pump? एक पंप है बेटा, उसका पावर कितना होगा? वो 10 सेकेंड में 100 kg वाटर को लिफ्ट कर रहा है. हाइट ऑफ 20 मीटर. That is the given information. I am repeating again. What is the power of pump that lift 100 kg water in 10 seconds and that height is 20 मीटर. मतलब 20 मीटर हाइट तक पंप के थ्रू हमने पानी को ऊपर फ्लो कराया. सो व्हाट विल बी द पावर बेटा? यहाँ पे पावर कैसे निकालोगे आप? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? लेट्स सी. Power is equal to W by T, or you can say that E by T, but E और W यहाँ पे given नहीं है. So पहले हम क्या फाइंड करेंगे? E and W बेटा. How can we find E? We have two formula for energy. One is kinetic and one is potential. For kinetic half mv square, but velocity is not given. So can we use mgh, that is the potential energy formula beta?
m h and g is given in the question, that is 10. g दिया है क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया है g बेटा, so what you will use 9.8. okay बेटा. so first we will find the energy, that is mgh. mass is 100 kg, g 10, height 20 meter. so 20,000 joule you will get here. 20,000 wait, 4 zeros, 20,000 जूल यहाँ पे इतना वर्क डन हो रहा है और इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है. नाउ यू कैन फाइंड द पावर बेटा. हाउ? नाउ E by T. E is 20,000. If any confusion, please inform in comment box. And time is 10 seconds beta. 1 0 cancel, you will get 2000 watt, or you can say 2000 joule per second. Is it clear? Any confusion? Let's see one more numerical. Clear बेटा? अगर आपको न्यूमेरिकल लिखना होगा तो एक बार वीडियो को रोक करके लिख लेने का. And please try to solve similar question. It's a very easy lesson. Monday we will start new lesson, that will be a 13th lesson. Why do we fall ill? Okay, let's see one more numerical beta. Question is, an electric bulb consume 7.2 kilojoule energy. An electric bulb consume energy, that is 7.2 kilojoule. okay, 7.2 kilojoule energy is consumed by a bulb in 2 minutes. एनर्जी हमें जूल में चाहिए और टाइम हमें सेकेंड में. सो कन्वर्ट इट हियर, 2 into 60, you will get 120 second. Here kilo means 1000 joule, means 7.2 into 1000. so 7200 joule, that is energy and time. okay, what is the power of electric bulb? so power is energy by time, means 7200 divided by 120, 0 cancel, 12 6 60 watt will be the power. understood beta? that is our answer. now we will see that next topic, law of conservation of energy. What is law of conservation of energy beta? law of conservation of energy states that energy neither be created nor destroyed. understood? neither be created nor destroyed. we cannot, that is the law of conservation. similar law you have seen in the law of conservation of mass in third lesson. we cannot create or destroy mass in any chemical reaction. so here law of conservation of energy states that we cannot create or destroy energy. energy neither be created nor destroyed. understood beta? so क्या होगा? energy can change from one form to another form. understood beta? means total energy always will be constant. so here we are discussing about potential and kinetic energy.
there are lot of forms of energy like sound energy, wave energy, wind energy, okay, light energy, but here we are discussing about potential and kinetic. So उसी के टर्म में बात करेंगे बेटा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. मीन्स काइनेटिक एनर्जी and potential energy, sum of kinetic and potential energy will be always constant. Always constant means what? Total energy, it is given in potential or kinetic, it's not matter. Energy will change from potential to kinetic, kinetic to potential, but result will be always constant. आया समझ बेटा? Energy can change from one form to another form, but you cannot add or remove. Yes, but during the changing the form of energy, some energy may be wasted beta, but total energy always constant ही रहेगा. कैसे एनर्जी वेस्ट होगा? सपोज वी हैव प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको दिया हमने? फैन को. तो क्या होगा? फैन हमारा रोटेट करेगा. मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बट सम एनर्जी विल बी वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. पूरा एनर्जी इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल में नहीं कन्वर्ट होगा, पूरा एनर्जी फैन को रोटेट करने में नहीं जाएगा. बहुत सारी एनर्जी फैन के में हीट के फॉर्म में भी रिलीज होगा. जब आप उसको टच करोगे तो वो गर्म रहेगा, बट टोटल एनर्जी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. आप इलेक्ट्रिसिटी जितना कंज्यूम हुआ है वो मैकेनिकल और प्लस वेस्टेज जो हीट के फॉर्म में, अगर टोटल को सम करेंगे तो वो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा. दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अंडरस्टूड बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टुगेदर इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. Okay, it's mean that mechanical energy neither be created nor destroy. ये इससे इसमें या इसमें इससे कन्वर्ट होगा, बट टोटल ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा. दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जस्ट टेक अ सिंपल एग्जांपल. सपोज वी हैव अ स्टोन. Suppose you have a stone that is the ground, and we have raised the stone at some height. जब स्टोन को हम ऊपर लेके जाएंगे बेटा तो क्या होगा? We have to do some work, and when we will do some work, our energy will be released, and that energy will be transferred in the stone. So a stone will gain the energy that is 20 joule. Okay. 20 जूल एनर्जी इस सर्टेन हाइट पे बेटा, ये सर्टेन हाइट पे इसका एनर्जी है 20 जूल. पोटेंशियल एंड काइनेटिक. सो हियर टोटल एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल. सपोज बेटा we have mark here. यहां से इसको यहां तक जाने में बेटा सपोज 20 सेकेंड लग रहा है. 5, 10, 15 एंड 20 सेकेंड. ओके. सो जस्ट यहां से जब बॉल को रिलीज करेंगे तो यहां पे सपोज आपका बॉल रुक गया. दैट टाइम 5 जूल एनर्जी इसका कन्वर्ट हो जाएगा, ये बचेगा 15 जूल. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपका 0 है, क्योंकि इस हाइट पे टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ओनली. तो जब बॉल को रिलीज करेंगे तो जो एनर्जी उसके पोजीशन में है, स्टोर्ड में है, दैट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द काइनेटिक. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 5 जूल. वो 5 जूल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गया. एट दिस हाइट इसके पास कितना एनर्जी होगा? 10 जूल. इसके पास कितना होगा? 10 जूल. वो 20 से 10 हो गया, और 10 जूल एनर्जी कहाँ गया? वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 जूल. ये 15 जूल. यहाँ पे 0,
और ये 20 जूल. Means every places you can see that at maximum height total energy, that is the mechanical energy, will be in the form of potential, and at the ground total energy will be in the form of kinetic. जब हम हाइट पे लेके जाएंगे तो एनर्जी पोटेंशियल में स्टोर होगा, और जब नीचे की तरफ रिलीज करेंगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक. You can see that every place's total energy is always 20, 20, 20, 20 and 20. It's mean that beta energy neither be created nor destroyed during the changing from one form to another form. That is our last topic. Please read the lesson, make your notes, complete your worksheet. Thank you beta.